Welcome back to another Happy Minds and the Diwali special Happy Minds. Oh, looking so young as well. Thank you so much. सुबह सुबह तुम लोग खुश कर देते हो. Namaste, everybody. It's so difficult to sit early in the morning. You sit dressed up and you're sitting in front of a laptop who doesn't appreciate how you look and you're waiting for the HM to start. So, staying alone and being online is a very different experience. Namaste, everybody. Shubh Deepawali. Deepawali ki Ram Ram sabko. Wow. So many went up. Santosh, Arvind, Nitin, Sachin. Wow. Anjali. Namaste, everybody. Devendra, Arvind, Varsha, Snehal, Neela. God bless you all and wonderful to see all of you this very morning. Sabko Deepawali ki Ram Ram. Those who have just joined in, मेरा आपसे हमेशा request होता है that don't miss out on the meditation side. It's a beautiful connect early in the morning. Chalo, how are you this morning? कैसे हो आप लोग? Namaste Tej from Jaipur, Kojakari, Rupesh, Ankit. Oh, you're there. Sanjay, Poonam, great. Kedar, Niranjan, wonderful to see all of you. Rajender, कैसे हो आप? जोरदार. Festive mood, takatak, full of energy. Great. Type how you're feeling this very morning. Festive time, you cannot feel any other way but festive, full of energy. Prasanna. Good, fantastic. Pataka. This is a Diwali special. Jakash. Must. Great. Wonderful. Lovely to see all of you. This is Happy Minds number 1116. ऐसा मुझे बताया गया. मैं तो count भूल जाता हूँ, but this is what has been told. Breezy, pleasant, high on Josh, wonderful, great. Lovely to see all of you in the best of your spirits and best of your moods. Those who have joined in Happy Minds for the first time, welcome to Happy Minds. And this is a session which we have been doing for the last 25 years. And welcome on board. It's wonderful to see so many of you who are new. If you are joining in for the first time, आप अपना लिखिए अपने, you can type in first and the city you're from, so I'll come to know आप कौन सी city से हो. It'll be wonderful to know which part of the country I'm connecting today. Ultimately, rains cannot dampen. Absolutely, nothing can dampen. Nothing should dampen our spirits. Hanji, if you are new, if you're here for the first time in Happy Minds, you can just type in first and you can type in the city you're from, and I'll come to know. And it'll be great to connect with you. Okay, let's kickstart our Happy Minds Diwali special today. What's on your mind? Hanji, what's on your mind this Deepawali? आप सबके mind में क्या चल रहा है? Let me listen, let me understand what's on top of your mind this Deepawali. Welcome Deepak from Gandhinagar. Ahmedabad, बहुत happening state है इस समय. With all the politicians visiting Ahmedabad or visiting Gujarat. Nikita, welcome from PCMC, Pune. Great, welcome to Happy Minds. Life kam milenge. So I asked you what's on top of your mind, and there's Anjali, she says life kam milenge. Yeah, milenge, jaldi milenge. I feel, I was thinking of doing Happy Minds offline, but when we do offline, then we miss on online, and then we can't have a combination of both because it's difficult to address both the audiences. So we decided to continue with online because बहुत सारे लोग from all over the country are there, even outside the country they're there, and they wait and they long and they kind of, for them Happy Minds is one thing which they wait for. ऐसा मुझे बताया गया है. So I didn't want to disturb that audience which is there. But उसके अलावा हम मिलेंगे अलग से, Anjali, definitely for sure. I'll plan something. I'm planning for a get together when we can meet. Namaste, everybody. Namaste, who just joined in. First time from
डोंडाचा आई शाबाश, ये क्या वर्ड है वीरेंद्र, ये कहाँ ये चलो, वेलकम वेलकम एवरीबॉडी who's coming in for the first time. So मैंने आपसे पूछा कि what's on top of your mind? Let's illuminate our entrepreneurial journey. Oh, good. Take that step. Yeah, we are missing one session. That's absolutely true. What we wait for happy minds. Okay. Chalo, theek hai. Those who have joined in new for the first time, what we do is we start with meditation. That's what we start with. And I request, I wish, and it's kind of a prayer from my side. मेरी प्रार्थना है आप लोगों से कि आप लोग मेडिटेशन का जो राउंड है, first 5 minutes, 7 minutes, वो miss मत करिए. That kind of sets the the build up for the entire happy minds. And it's good that you sit in a state of meditation at least once in a day. And एक आदत build हो गई that you can carry on for the remaining of the week. So वो miss मत करिए. So what we do, we start with meditation, then we have a few success stories which normally people post to me, or I happen to come across, or people share with me when I meet them, or my team gets those success stories. So we start with a round of success stories. So maybe 3-4 success stories are there which I share every HM. And then उसके बाद हम लोग अपना Happy Minds का session चालू करते हैं. This is not the way I dress every day. Today is Diwali special. So here we are in our traditional best, looking good. And I'm sure आप भी मुझे अच्छे नहा धो के फ्रेश होके आप लोग मुझे सुन रहे होगे, ऐसा मुझे विश्वास है. विश्वास पे दुनिया कायम है. चलिए, let's have a round of few success stories for today. The first success story is of Vishali. We met. She's a part of our tribe group, Vishali Sharma, and we met a few days back where she shared. We had a strategic meet where every quarter the entrepreneurs of our tribe batch, they meet and they kind of have a review of the quarter that went by, what initiatives they have planned for the coming quarter. So I was there in the evening with them, and there she shared that she has been featured in a biotech magazine as on women entrepreneurship, and she has been chosen as the women entrepreneur in the biotech industry. So and she was quite gung-ho about this and happy about it. So congratulations, Vaishali, on this. I happened to be in Bangalore last week, and वहां से फिर मैंने Happy Minds conduct किया. On the way back, I was driving, so it was a lovely drive to Bangalore and lovely long drive back to Pune, almost around 17 hours one way. And I wanted to drive for long, so I thought, let me just go for a drive. And me and Rachna, we had some great time together. 17 hours, you're there, you have discussions, you have so many ideas which you can bounce over each other. You can share so many things. So that's what we did. And while coming back, I stopped at Kolhapur, and there we have quite a few Chrysalians who were there. So I met one of the Chrysalians, Rohit Mali. He's got a company called Firefly, and they're into fire pump manufacturing. And it was lovely meeting him because he has been with me for many years. But this was the first time I could visit his unit in Kolhapur. And the journey was awesome. He speaks about his journey, about the entrepreneurial journey, how they started off with the manufacturing of fire trucks. And from there, they realized that fire truck is just the beginning. And all the fire trucks across the country, they are installing pumps in their fire trucks, which are not made in India. And they decided to make a pump in India. And that's how they became the first company in the country to make fire pumps. And then from there onwards, it has never been looking back. And today they are one of the largest fire pump manufacturers in the country, and exporting to almost 9 to 10 countries across the world. And they have quite a few new things. So what I loved about his success story was, he says, from time, I've been with you in the Game of Business program, I realized the importance of innovation. And I've been always saying it. And if you're an entrepreneur, though this is not a subject of entrepreneurship, just because this story has come up, I just want to share this with you. Agar aap entrepreneur ho, to abhi continuous innovation jo hai, it's given. It's a part of the business. And if you want to stay ahead of the competition, then you got to continuously innovate. And that's what he says. He says, we are ahead of a competition by a couple of years. And that's what we aim at. Can we be ahead of the competition by a few years? And that pushes them to innovate. And that's why their order book is full for the next 6 months. And that's the results which we get. I had another visit in a company called Sham Global. They are one of the largest manufacturers of gensets of Mahindra in the northern belt here, in the western belt here. And they're taking care of Maharashtra and Goa market as such. It was beautiful visiting them, where they shared about their journey. And
and how they have become one of the most sought after manufacturers of gensets of Mahindra amongst all the manufacturers across the country. And the last sharing is from this is a beautiful sharing which I came to know day before. हमारा दिवाली का meet था, and there I met Sonal Borade and Deepak Borade. And Sonal, she shared something so beautiful which brought a smile on my face, and I felt great about the whole thing. Sonal and Deepak, they have an organization called Raptech, and I think 4 or 5 months back, इन्होंने MG Academy का सब्सक्रिप्शन लिया फॉर द एंटायर टीम. एंड जब कॉर्पोरेट की एक सब्सक्रिप्शन लेता है कोई MG Academy का, तो MG Academy इज एन अकेडमी व्हिच इज ऑनलाइन वेयर यू हैव माय वीडियोस एंड थिंग्स लाइक दैट. सो वहां पर करीब 100 के आसपास के वीडियोस हैं, एंड यू कैन सी इट्स एन एनुअल सब्सक्रिप्शन व्हिच इज देयर. दोज ऑफ यू डोंट नो अबाउट इट. तो इन्होंने अपनी कंपनी के लिए कॉर्पोरेट सब्सक्रिप्शन लिया, एंड उसमें हमने एक फैसिलिटी दी है वेयर वन ऑफ द कंपनी मेंबर्स कैन सी how many people have seen how many videos, and which video has been seen fully, which has been seen half, or things like that. So they keep a track on the team that उन्होंने कितने videos देखे हैं. So she shared with me on the Deepawali night. She said, "Sir, आपसे कहना है कि we have our weekly meetings, and every week we have one video which everybody has to see. And now they're speaking the language which is there in the videos. They've seen so many videos of yours that somewhere the flavor is now of learning and development. Somewhere the flavor is of the language which you speak. और इतना अच्छा alignment हो रहा है आपस में, because everybody knows how to handle certain things in relation to their life, in relation to their relationships, in relation to so many aspects. तो कोई ना कोई reference निकालता है कि अच्छा वो वीडियो में ऐसा हुआ था, फिर क्या हुआ, फिर ऐसा करो. And then another thing she says is every week we also have a insight sharing कि आपने वो वीडियो देखा तो उसमें से आपने क्या सीखा, क्या समझा. And she says the video is same, the video is one, but everybody has a different insight. Everybody sees the same thing, but everybody does not share the same thing. Isn't it amazing to know that what mind can do and mind can, kind of process? So input एक है, लेकिन processing करके उसके output कितने हो सकते हैं? And she says that's what we love every week. So that was a wonderful sharing with me, and I said, let me share this happy minds with all of you. So all the best, Sonal, if you're watching this, and Deepak, continue on this journey of improving and making your team as powerful as you can, because an organization is as strong as the people working in the organization, right? Organization को कोई बाहर वाला अच्छा नहीं करता है. Organization is as weak or as strong as people in the organization. और अगर हमने अपने लोगों पे काम नहीं किया, उनको हमने strong नहीं बनाया, so how can the organization become strong? By just paying salaries, people don't become strong. You have to make them capable, and capability building is one big responsibility of an entrepreneur. Okay, this is the sharing on the success story side. The week was packed. We had quite a few things lined up, and ऐसा होता है जब आप बहुत packed होते हो तो the entire week just whizzes past. And it happened for me also the last week itself. So we had a few factory visits, we had sessions, we had YouTube live business में चालू किया YouTube में. It's a great thing which we have started. So on entrepreneurship, अगर आपको entrepreneurship के subject सुनने, then come on YouTube live every Wednesday evening at 7. And it will be great if you are there and you listen to some business insights from my side. We had our 10x platform Deepawali night, and it was lovely to see entrepreneurs from, उनको एक मौका मिलना चाहिए मस्ती करने का, एक मौका मिलना चाहिए to just let the pressure off. And the way we danced and we sang and we enjoyed Deepawali night was just awesome. मैं वहां से निकला देर हो गई रात को, and then yesterday also we had a Deepawali party at a friend's place. Just want to share one beautiful thing with all of you. So last few nights have been out, and late nights and then early mornings. So last night I said I'm leaving early. I told my friends I'll be leaving early. I said my family is here, but I'm leaving. I said I'll take a car and go. They said, "No, aap ruk jao na." I said, "No, I have to leave." They said, "Why did you keep a program when you knew that you had to come here?" And before I could share, before I could say कि ये Happy Minds में मुझे क्यों जाना है, या मैं why I had to keep Happy Minds, Rachna, she spoke. Rachna, if some of you don't know Rachna is my best half, or
half kya, she's me. So she said, without the blink of an eye, she said, वो भी तो एक परिवार है ना, और दीपावली अपने परिवार के साथ भी तो मनानी है, तो वो भी एक परिवार है जो वेट कर रहा है दीपावली के लिए, and that's why he has to go and take the HM. And on the way I was driving alone and I felt, wow, this is awesome ना, कि जो सोच आप रखते हो, अगर वही सोच आपके घर वाले रखते हैं उस चीज के बारे में जो आपके मन में वैल्यूबल है, तो कितना काम आसान हो जाता है. What you value, others also value. Isn't it awesome? I think that's what relationships are. कि आपकी नजर में जिस चीज की कीमत है, आपसे जो प्यार करता है उसकी नजर में भी वही चीज की कीमत है. And that's what the reflection of love is. And the drive from there to home was just wonderful, because I was just thinking and how blessed I am that I have such wonderful support. Okay, so this is how we are here today. आज का कुछ बातें हैं मेरे मन में, and I thought let me share this because ये फेस्टिवल के ऊपर जो बातें होती हैं ये हर बार नहीं होती. दीपावली साल में एक बार आती है, so I thought let me share a few thoughts on Deepawali with all of you. And let me start with this on a note of a question. Okay, the question is how do you make? अच्छा पहले ये बताओ तुम लोग मेरे साथ हो कि नहीं हो? Oh, lovely thought for ma'am. You're there with me, all of you, or not? Before I move on into the sharing of Deepawali. Arya, let me get some responses from all of you. Yeah, there with me always. खुश कर देते हो तुम लोग. ठीक है. So my love you all. Hello. Yeah, okay. Great. सब जिंदा हैं. चलो बढ़िया. तुम लोग क्या क्या नोटिस करते हो? They says that what a blush you had on your face. चलो, great. My team share your email, Gopal. My team will share the email address. You can have it there. चलिए, मेरा सवाल आपसे है कि when how do you break okay, let me put it like this. Let me start out with this, that people have asked me a few, they have messaged me that, and the message has been on a side which has again brought a smile on my face, and they say that we love your postings on the festivals. So I've been every festival when we have at home, we celebrate at home. So I do post it. Now it's not about, since I'm a public figure, I feel it's a responsibility of mine that I should promote something which I live by. So why do I post about festivals there? Because one, I live it. We have it at home, we celebrate. And second is, I want people to celebrate. I want people to follow traditions and culture. And that's what I do. And that's the reason why I post it on the social media. I was there at one of the entrepreneur space, and he says, I love more than your business posts. I love the way you are at home, the way you are in your personal life, the way you celebrate the festivals. हम लोग तो काम में इतना अटक गए हैं कि हम लोग भूल जाते हैं. And that's the reason why even in LinkedIn, which is a professional platform, मैं वहां भी sharing कर देता हूँ कभी-कभी on festivals. Yesterday also I did post about the Deepawali night which we had. So now the reason why I do post and the reason I'm sharing what I'm sharing right now, I'll tell you. But my question to all of you is, how do you beat a strong opponent? आपके सामने एक opponent है जो strong है, बड़ा काबिल है, बड़ा ही हुनर है उसके अंदर, skill sets में बड़ा ही आपसे आगे है. How do you beat that person? चलो, let me read your guesses. My question is,
How do you beat a strong opponent? आपके सामने जो इंसान है वो मजबूत है, काबिल है, आपसे शायद अच्छा भी है, उसको कैसे हराओगे यार? By innovating, by smile and patience, by learning from him. तुम लोग सब पॉजिटिव लोग हो. By working consistently with discipline, by knowing his weaknesses. चलो तो सोचो क्या करोगे जिससे आप you can beat a strong opponent. जब आप उसको हरा नहीं सकते हो, आपको समझ में आ गया कि मैं इसको हरा नहीं सकता हूँ, अगर ऐसे मैं खेलूंगा ना इसके साथ तो मैं हार ही जाऊंगा. So what do I do? By knowing his weaknesses, by making him friend. शाबाश, उसको दोस्त बना लोगे. By becoming better yourself, by upgrading self. See the effect of happy minds on all of you. All of you are positive by fighting, collaboration, partnership. शाबाश. By holding on to your strengths. नहीं, इसको हराना है, उससे उसके साथ जो है ना पार्टनरशिप नहीं करनी है. वो दोनों में से एक ही जीतेगा. By holding on to your strengths and believing they are your strengths, you will give your best. ओहो, तुम लोग तो सब अच्छा ही सोचते हो यार. Attach him culturally, by observing, analyzing, by improving. Oh my God, so many have come in. ठीक है. Okay, great. You all are positive on a positive side. Let me give you another way of how people normally deal with it. When it comes to tough competition, when it comes to, you would see whether it be cricket, whether it be boxing or any other sport at times, जो आपने answers दिए ना, ये positive side में. And when I say positive side means you becoming better, you talking to him, you learning from him, you upgrading yourself. These are all long-term efforts which require a lot of efforts from your side. But एक और तरीका है, to beat their opponent is to make him emotionally disturbed, right? You hit him below the belt. You hit him in a way wherein he's kind of shaken up. And that is, बोलते ना कि all is fair in love and war, and that's what is happening on the playing field also. कि आपने फिर कुछ पैंतरा इस्तेमाल किया जिससे वो हिल गया, emotionally shaken up हो गया. And that's why if you were to watch cricket or any other sport as such, तो वो कुछ बोलते ना कि they kind of say things to other players जिससे वो हिल जाता है, and maybe the next ball he's out, or next ball maybe he doesn't play well. तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, सही है. I'm just saying that when you know that you can't beat your opponent, you kind of rattle him, you kind of shake him, you kind of disturb his roots. That's what happens. How do you break a family? You break a family by somewhere over a period of time that the child is not respecting what he has been given as values from his parents. You kind of make people lose trust in each other. That's how you break a family. How do you uproot a tree? Either you bring in machines which can pull the tree out, or you make the roots very weak. जितनी आप जड़ों को कमजोर कर दोगे उतना आसान हो जाएगा पेड़ का गिरना. जितने आप घर के लोगों का आपस का विश्वास कम कर दो, जितना उनके घर के संस्कारों को आप हिला दो, उतना ही घर का टूटना आसान हो जाता है. Right? So when people are shaken in areas which their foundation is, it's easy for you to beat them. When I'm leading you to one aspect. How do you make a nation weak? You make a nation weak by hitting on the roots. And how do you make your nation, how do you make a nation strong? By ensuring that the roots are preserved, nurtured, and made strong. Now, what I'm sharing is something which I've observed, and I'm sure all of you must have observed. And that's the reason why I've been so openly standing up for what I'm speaking, I'm going to speak right now. कि पिछले कई सालों में ये जो हमारा भारतीय संस्कार है, भारतीय कल्चर है हमारा, इसको बीट करना मुश्किल है, नामुमकिन है. अगर आप सच्चाई से खेलोगे, सही ढंग से खेलोगे, पहले वो तो बीट ही क्यों करना है इसको. लेकिन अगर इसको बीट भी करना तो ये पॉसिबल ही नहीं है, हजारों साल से चलता आ रहा है. So how do you beat it? You beat it by kind of, bringing in narratives, bringing in a systematic, destructive approach towards the culture.
And that brings a lot of responsibility on each one of us कि हम अपनी जिम्मेदारी से इस कल्चर को संभाल के रखें, अपनी संस्कृति को हम संभाल के रखें, each one of us. And we have our own pressures. हमारे काम चल रहे हैं, हमारा लाइफ चल रही है, we have our own living to do, we got our own challenges to handle. लेकिन उसके साथ साथ बड़ा जरूरी है that we also hold on to where we come from. We also hold on to what makes us what we are. क्योंकि जब यही नहीं रहेगा तो हम रह के भी क्या करेंगे? And if you were to see, systematic narratives have been built over the years. And हमें मालूम ही नहीं पड़ता है कि कहाँ जाने अनजाने में कि क्या चीज हमसे हमारे हाथ से छूट गई. अभी we're talking, कल एक ग्रुप में आया, that with all the respect and love to that person who sent the message that it's Deepawali time and good to see all of you getting up for Deepawali. Just a simple request and plea to all of you, please be nice and kind to all the animals and birds, and this Deepawali will make life safer for all of them. And ऐसा करके वो message आया, and in the end of course the message would be that please don't burst crackers. And then there was a lot of people saying thumbs up to that, and then another one, एक और इंसान ने डाला कि with I'm happy to live in the company of such people who have such wonderful thoughts, right? But continuing on the same thought, I would request you that आप अपने घर के ACs निकाल दीजिए, right? And because when you have your windows, and you should cover up all your windows with brick so that no sunlight enters the home, because जितने sunlight जाएगी उतना आपका कमरा गर्म होगा, उतना आप AC use करोगे, जितना AC use करोगे उतना environment खराब होगा. So please stop using the ACs, please stop driving your cars, please stop doing all that. उसने एक साथ में एक counter भेजा. तो आप देखो कि narrative जैसे build होगा कि you stop celebrating things in a way. I'm not saying cracker burn करने से pollution नहीं होता. I'm saying crackers burn करने से pollution होता है. लेकिन सिर्फ क्रैकर बर्न करने से पॉल्यूशन होता है ये मैं नहीं मानता. सिर्फ पटाखे जलाने से ही पॉल्यूशन होता है मैं ऐसा नहीं मानता. तो आप सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करते हो, एक ही चीज को आप दबाते हो, एक ही चीज को आप बंद करने की बात करते हो, देन दैट्स अ प्रॉब्लम एंड दैट्स एन इश्यू. तो अभी आप दीपावली पे पटाखे मत छोड़ो, आप फिर उत्तरायण आएगा उसमें पतंग मत उड़ाइए, फिर होली आएगी उसमें आप रंग मत खेलिए, पानी मत खेलिए, फिर उसके बाद जो गणपति आएंगे विसर्जन मत करिए. तो करें क्या? सब बंद कर दें? शुड वी स्टॉप एवरीथिंग? और कहीं बंद ना करते करते एक दिन खो ना जाए सब चीज. I remember once, so this whole concept of what we are has gone to a different side altogether. I remember once some years back I was taking a session, or we were all the participants were sitting there, and one of the participants asked a question on subject of Hinduism. I'm no master on this. मेरी कोई पकड़ नहीं है, मेरी कोई समझ, जितना मैं जीता उतनी मेरी समझ है. So और मेरा वो फील्ड में नहीं है. But he asked a question and I had some clarity. मैंने वो clarity दे दी about Hinduism, जो भी मुझे मालूम था. And वो खत्म हो गया. We all came back. It was a residential program. हम लोग वापस आ गए. After a few weeks, उसमें से एक पार्टिसिपेंट था, वो मुझे फोन करके बोलता है आपसे मिलना है. मैंने कहा आजा मिलने के लिए. आया, मिला. I thought maybe उसकी कुछ पर्सनल बात होगी, कुछ स्पेसिफिक उसने बात करनी होगी. वो बात करते मुझे बोलता है कि सर, you should not speak about Hinduism in the programs. And I said, why? नहीं sir, we are a secular country and no, you should not speak about it. तो आपको सिर्फ ऐसी में मुझे शेयर करना था क्योंकि आपसे I connect with you and I love you and things like that. I said, all said and done, thank you so much. But what I will speak in my programs is absolutely it's up to me. You cannot dictate what I should speak and what I should not speak. And I sent him back. But I was thinking about it. Okay, I was speaking about who we are. And if speaking about your own religion is not being secular, then what is being secular? I'm not putting anybody else down. I'm not putting any other culture down. I'm just speaking about my culture. And if speaking about your culture has become unsecular, तो आप समझो हम कहां पहुंच गए? हम कहां पहुंच गए? I'm just sharing with you that hold on to these traditions, hold on to these cultures of ours. ये festivals हैं, ये festival को हमने holiday बना दिया. A friend was asking me, where are you going for a Deepawali holidays? I said, we have no holiday in Deepawali.
दीपावली इज ऑफ डे, ऑफ वर्किंग डे, अग्रीड कि काम नहीं करते. दीपावली इज ऑफ स्कूल डे, अग्रीड की पढ़ाई नहीं करते. बट दीपावली इज नेवर अ हॉलिडे. In my entrepreneurial program, I speak about the 4 kind of days we have. So we have, holiday, we have a free day, we have a focus day, we have a buffer day. तो ये अलग अलग तरीके के दिन होते हैं. तो बट दीपावली इज नॉट अ हॉलीडे. जब आपने उसको छुट्टी मन में बोल ली ना, तो फिर आप उसको छुट्टी वाला ट्रीटमेंट देते हो. दीपावली इज मच मोर देन दैट. इनफैक्ट एनी फेस्टिवल of any culture, of any religion, it's not a holiday. Yes, we have time off from work. लेकिन वो टाइम हमें दिया जाता है कि आप उस फेस्टिवल को मनाएं. वो टाइम दिया गया कि आप उस फेस्टिवल में जो करना चाहिए वो करें. लेकिन उसको छुट्टी बना लिया तो लोग दे प्लान फॉर दीपावली हॉलीडेज. एंड आई एम नॉट सेइंग डोंट गो फॉर हॉलीडे, बट हॉलीडे इज अ डिफरेंट टाइम. यू गो आफ्टर दीपावली. बट आप अपना घर छोड़ के अगर छुट्टी बजाना चालू कर दिया आपने, तो मैं कह रहा हूं आपसे कि हम कहां पहुंच गए. एंड दैट्स व्हाट आई एम स्टैंडिंग अप फॉर. I'm saying, let me stand up for something with so many followers which are there. Some may agree, some may not agree. It's okay. I don't have to make everybody accept what I'm saying. But I'm saying that ये culture है हमारा, ये हमारे traditions हैं, ये हमारी संस्कृति है. इसको हम नहीं पकड़ेंगे फिर कौन पकड़ेगा? So first, stop saying it's a holiday. दीपावली छुट्टी नहीं है. दीपावली एक त्योहार है. And so is the case with every other festival. ये सारे त्योहार होते हैं, छुट्टी नहीं होती. The way you look at it will change the approach. फिर ये त्योहार है तो फिर ये इसमें करना क्या है? All festivals are all about celebrations. All festivals are all about happiness. And blessed are we to be in a country where we have every month there's a festival. Every month there is something beautiful happening. Every month there is reason to be happy, reason to celebrate. इससे बढ़िया इकोसिस्टम क्या हो सकता है? आप कभी किसी कंपनी में काम करो ना, तो अगर आप करते हो तो आप समझोगे कि एक इकोसिस्टम है टू कीप द ह्यूमन हैप्पीनेस कोशेंट हाई. हर कंपनी में होता है. मैं सिखाता हूं कि हर कंपनी में ऐसा इकोसिस्टम होना चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम? कि उस कंपनी में आप गए और आप रह रहे हो, यू स्टेइंग देयर फॉर सम इयर्स एंड यू वर्किंग देयर, तो उस कंपनी में कुछ तो ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए. उस मैकेनिज्म की वजह से इंसान जो है इंगेज रहे, खुश रहे, सेलिब्रेटिव रहे. And these mechanisms can be your birthday celebrations. Mechanism can be, maybe a get together every month. Mechanism can be a movie once in a quarter. Mechanism can be, some games which you're playing. Mechanism can be some sporting events. तो ये सब क्या है? कुछ ना कुछ mechanism है जिसमें आपने कंपनी में बिठा दिए और आपकी कंपनी में लोग आ रहे हैं तो वो जी रहे हैं. तो फिर क्या होता है? उससे खुशहाली हो रही है, उससे एक हंगामा हो रहा है, उससे एक ट्रिगर ऑफ हैप्पीनेस का एनवायरनमेंट बना हुआ है. दिस इज व्हाट एन इकोसिस्टम इज. इन द सेम वे हमारा जो कल्चर है, हमारे देश की जो संस्कृति है, इट्स दैट इकोसिस्टम कि ऐसे मैकेनिज्म्स फिट हैं कि हर महीना, हर 15-20 दिन में आपके पास कुछ कारण है खुश होने का, आपके पास कुछ कारण है कुछ सेलिब्रेट करने का. ये मैकेनिज्म है. अब उसमें से आप कुछ कर पाते हो, कुछ नहीं कर पाते हो, अग्री. बट इससे बढ़िया मैकेनिज्म क्या होगा? I was, if you were to see, it's not a comparison, but I'm just saying that, aren't we blessed? कोई मौसम से कनेक्टेड है, कोई कोई स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, कोई चेंज ऑफ वेदर से कनेक्टेड है, कोई फार्मिंग से कनेक्टेड है. कितने सारे फेस्टिवल्स हैं. The choice is ours. So Deepawali is not a holiday, it's a festival time. तो फेस्टिवल टाइम में करना क्या है? फेस्टिवल टाइम में जो फेस्टिवल्स में करना है, कपड़े पहनने हैं, अच्छे कपड़े पहनने हैं, शॉपिंग करनी है, मार्केट जाना है, एंड लोगों के घर जाना है, लोगों को घर पे बुलाना है. आई एम पैक्ड फॉर दीपावली. वी गो टू हाउसेस ऑफ आवर फ्रेंड्स एंड वी इनवाइट पीपल टू आवर होम. इट इज सो वंडरफुल टू गो टू द हाउसेस ऑफ पीपल. इट्स सो वंडरफुल टू इनवाइट पीपल टू योर होम्स. कि लोग घर में आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, तो आप खाने पे लगे, मेन्यू डिसाइड हो रहा है, डेकोरेशन हो रहा है, घर की साफ सफाई हो रही है, कुछ नया बन रहा है, कुछ खाने को बन रहा है. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस दिस और नॉट, कि जैसी फेस्टिवल्स होते हैं ना, तो आवर होम, तो हमारे घर में कढ़ाई चढ़ती है. मतलब घी तो कढ़ाई में आएगा, घी की स्मेल तो घर में होगी, पूरी बनेगी, कुछ ना मिठाई बनेगी, कुछ ना कुछ तो होगा. एंड आई हैव दोस मेमोरीज सिंस चाइल्डहुड कि मैं कभी स्कूल से आता था और घर में अगर घी की स्मेल आ रही है
it would bring a smile on my face because कुछ तो festive है, कुछ तो अच्छा हो रहा है. That's the memory which is there. And I'm sure many of you would have the same memory. And I'm saying, hold on to it. Make sure your children also have the same memory. कि घर में अगर कढ़ाई चढ़ी है इसका मतलब कुछ तो अच्छा हुआ है, कुछ तो अच्छा हो रहा है, कुछ तो सेलिब्रेट होने वाला है. And many of us, we have outsourced this. And I've been always telling people who have been working or who as couples, they're working. I said, okay, all agreed. You're working, you don't have time and you buy certain things from outside. लेकिन कुछ ना कुछ तो घर में बनाओ यार. कुछ ना कुछ तो चकली तो बनाओ घर में. कुछ कोई छोटी मिठाई तो बनाओ घर में. क्योंकि कुछ करने से ना सेलिब्रेशन होता है. आपने बाहर से खरीद लिया, मिठाई भी आ गई बाहर से, वो चकली भी आ गई बाहर से, सारा सब चीज बाहर से आ गई. तो आपने क्या किया? वो इलेक्ट्रिशियन आया, उसने लाइट लगा दी, आप बाजार से खरीद के लेके आ गए, सेलिब्रेशन ठीक है, इट्स ओके, इट्स देयर, बट समथिंग हैज टू बी डन फ्रॉम योर साइड. तो मैं अपने घर में जो हो सकता है, मैं लाइट्स में खुद लगाने की सोचता हूँ. घर में मिठाई हम लोग कुछ तक जितना हो सकता है हम खुद बनाते हैं. तो उससे क्या होता है, समवेयर यू गेट कनेक्टेड. And when you get connected, you get involved. When you're involved, you're a part of the celebration. You are not watching the celebration. You're a part of the celebration. And that makes all the difference. मेरे साथ हो कि नहीं हो? Oh my God, so many comments have come in. So, मेरा आपसे ये कहना है कि great, मेरे साथ रहो and stay with me for and keep on giving me your insights on what I've been sharing. So I'm saying it one more time to all of you that ये कहीं अनजाने में ना करते करते कहीं ये त्योहार हमसे छूटे ना जाए. एंड नैरेटिव्स बिल्ड हो रहे हैं आसपास जो आपको समझ नहीं आ रहा कि किस रंग से आपके माइंड में वो नैरेटिव्स घर बना रहे. राइट? सो करवा चौथ आया, यू नो, आई डोंट नो इफ यू सेलिब्रेट होई अष्टमी. हम लोग नॉर्थ में हम लोग अहोई अष्टमी सेलिब्रेट करते हैं, वेयर मदर्स कीप अ फास्ट फॉर द चिल्ड्रन. करवा चौथ इज वी ऑल नो, वो फिल्म्स ने बड़ा फेमस किया है दैट द वाइफ्स कीप अ फास्ट फॉर द हस्बैंड. ना वो नैरेटिव बिल्ड है, इट्स रिग्रेसिव, फिर इक्वालिटी आ जाती है, एंड गॉड नोज व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर. बट ऑल दोस लेडीज हु कीप दैट फास्ट, यू शुड आस्क कि उनके मन में क्या है, वो क्यों रखती है. देन यू विल अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दैट. और मैं जितना सोचता हूं ना ये कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर कल्चर कि एक, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे अहोई अष्टमी हो, चाहे कोई और फास्ट रखा हो, कि आप देखो ना कि आप किसी से प्यार करते हो ना. मैं लास्ट एचएम भी बोला था कि आई विल शेयर ऑन दिस एस्पेक्ट कि आप जब किसी से प्यार करते हो तो प्यार करने का जो इजहार होता है, you express your love. So how do you express your love? So you express your love, maybe there are ways. One way can be you buy a gift for the person. So आप गए मार्केट से, आपने सोचा क्या उसको पसंद है, आप उसके लिए लेके आगे गिफ्ट. आप कुछ काम कर सकते हो उस इंसान के लिए. तो there are various things which you can do for a person. And the lowest, सबसे तुच्छ चीज एक इंसान के लिए कर सकते हो वो है एक गिफ्ट लाके देना. सबसे तुच्छ, सबसे छोटी चीज. राइट? उससे थोड़ा ऊपर आते हो तो आप उसके लिए कुछ काम कर लेते हो, उससे ऊपर आते हो तो आप उसके साथ कुछ समय बिताते हो. लेकिन सबसे उच्च लेवल की चीज क्या कर सकते हो आप किसी के लिए? आप उसके लिए उपवास रख रहे हो, आप उसके लिए व्रत रख रहे हो, आप उसके लिए फास्ट कर रहे हो, दिन भर आप उसके लिए खाना नहीं खा रहे हो, पानी नहीं पी रहे हो. तो दिन में कितनी बार याद करते होगे उसको? दिन में कितनी बार सोचते होगे उसके बारे में? आप वो दे रहे हो जो आपका अपना है. गिफ्ट तो किसी और ने बनाया, वो तो गिफ्ट बना के आपने सिर्फ पैसा दिया और आप गिफ्ट लेके आ गए. उसमें भी आई एग्री दैट यू हैव दैट पर्सन इन माइंड, बट व्हाट इज ट्रूली योर्स, दैट यू आर गिविंग. सो दैट फास्ट व्हिच यू आर कीपिंग, दैट इज ट्रूली योर्स. वो आपका है. इसमें कोई बाहर से कुछ नहीं हुआ है. आपने अपने आप को एक सिचुएशन में डाला है where somewhere a bit of sacrifice, a bit of suffering, a bit of love, ये सबका combination, and that's what you say, this is what this person means to me. कितनी बड़ी बात है. और उसको ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर दिया, इट्स रिग्रेसिव.
अरे एक माँ अगर अपने बच्चे के लिए फास्ट रखती है तो उसके मन में बच्चे के प्रति कितना क्या भावना है वो समझ में आता है, और कितनी और उसके बच्चे के लिए प्रेम डेवलप हो जाएगा, उसकी अलग एक बात। So I'm just saying that hold on to this as much as you can. समय का प्रेशर है, सब चीज का प्रेशर रहेगा, लेकिन उस प्रेशर के बावजूद भी आपने अपने त्योहारों को नहीं छोड़ना है. You should celebrate with the best of your spirits and energy. तो फेस्टिवल्स का क्या काम है? फेस्टिवल्स में एंजॉय भी करना है, फेस्टिवल में काम भी करना है, घर की साफ सफाई भी करनी है, शॉपिंग भी करनी है, लोगों के घर भी जाना है, लोगों को अपने घर भी बुलाना है, अच्छे भी लगना है, राइट, अच्छे भी लगवाना है, लोग बच्चों को, घर के लोगों को, पटाखे भी जलाने हैं, दिए भी जलाने हैं, खुशियां भी लानी है. और खुशियां जो होती है ना, खुशियां ऐसे आती नहीं, उनको बुलाना पड़ता है. खुशियों को, खुशियां कहीं रुकी होती हैं. एक आपके दरवाजे के बाहर चौखट में ना खुशी रुकी होती है, और वो देखती है आपको कि ये कब बुलाएगा मुझे अंदर. वो ऐसा बार बार ऐसे देखती है, ये अभी कुछ करेगा तो मैं अंदर आऊंगी, ये कुछ करेगा तो मैं अंदर आऊंगी. तो आप घर साफ करते हो तो खुशी अंदर आती है. आप घर में कढ़ाई चढ़ाते हो और कढ़ाई की खुशबू आती है तो खुशी अंदर आ जाती है. आप कुछ पूरी सब्जी बनाते हो तो खुशी अंदर आती है. आप दोस्तों को घर में बुलाते हो तो खुशी उनके साथ अंदर आ जाती है. आप किसी दोस्त के घर जाते हो तो आप वहां से खुशी लेके आते हो. हैप्पीनेस वेट्स फॉर अस जस्ट आउटसाइड आवर थ्रेशोल्ड ऑफ द डोर, वेटिंग फॉर अस कि ये कुछ करे तो मैं एंट्री मारूं. और बहुत से घरों में जो है ना, खुशी नहीं आ रही है क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहे. आई होप यू गेट द जिस्ट ऑफ व्हाट आई एम सेइंग. खुशी अपने आप नहीं आती, कुछ करने से आती. कुछ तो करो. एंड दैट्स व्हाट ये फेस्टिवल्स दे मेक अस डू समथिंग. कि हमसे कुछ करने को बोलते हैं, करो. और जो करने को बोलते हैं वो सब पॉजिटिव ही तो है ना. शॉपिंग करना पॉजिटिव है, इकोनॉमी मूव होती है, देश अच्छा बनता है, लोगों को काम मिलता है, कितना बिजनेस होता है त्योहारों में. वी वर ऑन द स्ट्रीट्स यस्टरडे, ऐसा मारा मारी हो रही है. सिंस आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड स्वीट्स, इतना काम होता है दीपावली में, इतना काम होता है. You go on the streets and you will see सब जगह लाइट्स लगी हुई है. Is it not happiness to see every shop decorated? Lightings है, decoration है. So you go on the streets, वहां you buy something, खुशी है. आप कुछ बनाओगे तो वहां खुशी है. So much of happiness is there during all these festivals, and we miss out on that by not celebrating, by not putting an effort, by not working for it. अपने आप तो नहीं आती सर खुशी, कुछ तो करना पड़ता है. Rashna, you would like to add something? हाँ, नमस्ते सर. Namaste. Can you have a video on? Yeah, just a second. ठीक है. हाँ हाँ. ओके. नमस्ते एवरीबॉडी. नमस्ते. सबसे पहले आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और शुरू हो गई है दिवाली, बहुत सारी इवेंट्स शुरू हो गए हैं, बहुत सारी चीजें हैं विच वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू. सो मैंने ना एक नोट लिखा था कुछ दिन पहले कि कैसे ये त्योहार बहुत खास है मेरे लिए, क्योंकि एक तो शायद ना लूनर कैलेंडर, शायद नहीं पक्का है वो, कि लूनर कैलेंडर के हिसाब से आई वाज बोर्न ऑन द डे ऑफ दिवाली. तो एवरीबडी मेक्स मी फील सो वेरी स्पेशल कि हाँ आज मेरा जन्म है. बट उसके अलावा भी ना बहुत सारी अच्छी यादें जुड़ी हैं इस त्योहार के साथ. एंड कल एक बहुत अच्छी बात हुई वेर मैं और गौतम सिद्धार्थ हम लोग आ रहे थे. एक इवेंट, फैमिली इवेंट था, वो अटेंड करके वी वर कमिंग बैक. एंड बच्चों ने बोला कि ये जो दिवाली होती है ना, ये बहुत अच्छा समय होता है. मैंने कहा क्यों? कहते नहीं, अच्छा लगता है, सब लोगों से मिलते हैं और कुछ कुछ होता है और लोग हमारे घर आते हैं, हम लोगों के घर जाते हैं, तो अच्छा लगता है. एंड आई वॉज हैप्पी. मतलब मैं अंदर से इतनी खुश हुई ना कि इतने साल तक जो किया ना, जो भी एफर्ट लिए, जो भी काम किया, उसका नतीजा ये दिख रहा है कि दैट द चिल्ड्रन आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. तो कभी कभी ना ऐसे दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर आईआईटी एग्जाम्स, तो एंट्रेंस होती है तो बहुत बहुत पढ़ाई करते हैं, तो मैं काम नहीं बताती हूँ. तो कल जब उन्होंने बोला कि वी आर रियली वेरी एक्साइटेड और हमारी 2-3 दिन की छुट्टी है, तो मैंने धीरे से पूछा
फिर लाइटें तुम लगा दोगे ना, मैं इलेक्ट्रिशियन नहीं बुलाऊं ना? तो कहा, हाँ हाँ हम लगाएंगे सब लाइटें, आप बिल्कुल किसी को नहीं बुलाना, हम लगाएंगे। एंड आई फेल्ट कि दिस इज व्हाट आई गॉट फ्रॉम माय पेरेंट्स, दिस इज व्हाट दे गेव टू मी, क्योंकि उन्होंने वो अपने तरीके से मनाया और हमने बहुत अच्छी यादें जोड़ी उनके साथ। और मुझे लगा कि शायद मैंने भी ये दिया अपने बच्चों को, क्योंकि मैंने और मनीष ने इतने सालों में, हमारे पूरे परिवार ने जिस तरह से त्योहार मनाया, तो आवर चिल्ड्रन नाउ लुक फॉरवर्ड कि हाँ यहाँ पर ऐसा होता है। एंड ऑन द कॉन्ट्रास्ट I met a couple, a working couple, very busy, very much into business. तो and I just asked कि अरे ताश नहीं खेलते हो, कुछ कर नहीं रहे हो? तो वो बोले नहीं नहीं, दिन भर इतना दिमाग लगाते हैं कि अब शाम को हमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। एंड आई थॉट कि हाँ ये एक पर्सपेक्टिव है, लेकिन क्या क्या मेमोरीज क्रिएट होंगी ना बच्चों के लिए, क्या उनके बच्चे सोचेंगे, व्हाट इज द थॉट दैट दे विल हैव ऑफ दिस फेस्टिवल। एंड आई थिंक यही सबसे बड़ा, यही सबसे बड़े जुर्म बोलूंगी मैं इसको, जुर्म, ये कि हम सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए, सिर्फ अपने टाइम की कमी के लिए, सिर्फ अपने एफर्ट ना डालने के लिए हम अपने बच्चों को वंचित करेंगे एक इतने अच्छे त्योहार से, एक इतने अच्छे कल्चर से, क्योंकि हमारे पास ताकत नहीं है, हम थक गए हैं, या हम एक्साइटमेंट नहीं दिखा सकते हैं, दैट आवर चिल्ड्रन विल बी डिप्राइव्ड ऑफ अ ब्यूटीफुल कल्चर दैट 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 कैन गिव सो मच टू देम, दैट कैन गिव सो मच ऑफ, एक होता है ना, वो अपनी जड़ों से जुड़े रह सकते हैं, वो कुछ बना सकते हैं ना। तो मुझे लगा ये गलत है, ये कैसी सोच है कि आप इतना सा भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं ले सकते हैं टू टू मेक समथिंग गो फॉरवर्ड। और किसी ने ना कहा था कि जितना जितना हमारे माँ बाप करते थे त्योहार में या रिचुअल्स में या कस्टम्स में, वो धीरे धीरे ना कम होते जा रहा है हमें, और हमें कम नॉलेज है। हमारे माँ बाप को थी, हमारे दादा को जितनी ज्यादा थी उससे कम हमारे माँ बाप को थी, जितनी हमारे माँ बाप को थी उससे कम हमें है, जितनी कम हमें है हमारे बच्चों को और भी कम हो जाएगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि फिर धीरे धीरे तो खत्म ही हो जाएगा ना फिर। तो इट रियली टेक्स एन एफर्ट, बट इट इज वर्थ द एफर्ट, इट इज वर्थ, मानसी ने कहीं लिखा है कि हम ना एक्स्ट्रा काम समझ के उसको बर्डन समझ लेते हैं, है वो एक्स्ट्रा काम, इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट बाय द वे हो जाएगा, बाय द वे होता ही नहीं है, वो आउट ऑफ द वे जाके करना पड़ता है। बट आई थिंक वी ओ दिस टू आवर चिल्ड्रन, वी ओ दिस टू आवर फ्यूचर जनरेशंस। क्या देके जाएंगे ना हम उनको, what are we going to give to them if not this holding on to the tradition? So मेहनत जरूर है, लेकिन please take an effort, in spite of your challenges, in spite of the work, in spite of everything, do do ensure that you celebrate festivals. Or I was remembering that last Diwali na, I had this thought कि शब्दों की दिवाली नहीं मनाना, कर्मों की दिवाली मनाना। तो शब्द मतलब क्या होता है, बस हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली, व्हाट्सएप मैसेजेस, दैट्स इट। वो नहीं होता है, नहीं, कुछ करना चाहिए, घर की सफाई करनी चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, लेकिन कर्म से मनाएंगे। जब हम इन्वॉल्व होते हैं, जैसे सर ने बोला, तो हम एक्सपीरियंस करते हैं और उसकी खुशबू आती है हमारे अंदर से, और फिर जब हम महकते हैं तो हमारे चारों तरफ के लोग भी महकते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप महकिए और बाकी लोगों को भी महकाइए। और एक छोटा सा थॉट जो मुझे आज बहुत आया कि हमारे फोन में ना वी हैव दिस डिजिटल ब्यूटीफुल थिंग, इसमें ना बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, और वो सिर्फ कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उसमें से कितने लोग तो ऐसे हैं ना जिन हमें पता भी नहीं हमने कब वो कॉन्टैक्ट सेव किया, वो आदमी है कौन, हमें उसका नाम नहीं पता, मतलब बस नाम है वो, इट इज जस्ट अ कॉन्टैक्ट। तो इस बार जो वो कॉन्टैक्ट्स है ना, उनको कॉन्टैक्ट्स मत रहने दीजिए, उनको ऐसे उनका क्या कहती हूँ मैं, जो ओहदा है ना, ओहदा बढ़ाइए। तो कांटेक्ट से उसको थोड़ा रिश्ते तक लेके जाइए, उस कांटेक्ट पे जाके कॉल कीजिए उससे और बात कीजिए उससे। नहीं तो क्या होता है कि फॉरवर्ड टू ऑल कॉन्टेक्ट्स हो जाता है, बट फिर जुड़ते नहीं है ना हम, तो जुड़ने के लिए जरा बात कर लेनी चाहिए, तो कॉल कीजिएगा। आई थिंक ये मैंने कॉन्शियसली किया इस बार, नॉट जस्ट ऑन दिवाली बट अदरवाइज ऑल्सो, कि रैंडमली कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली और फिर देखा कि हाँ ये कौन है, अच्छा इससे बहुत दिन से बात नहीं हुई, चलो कॉल किया जाए। तो हम बहुत फॉर्मल भी हो गए हैं, इज इट अ गुड टाइम टू कॉल, कैन आई कॉल यू नाउ, तो ठीक है, वो व्हेन इट इज अ प्रोफेशनल थिंग इट्स ओके, बट दिवाली पे आप कभी भी किसी को कैसे भी कॉल कर सकते हैं, दे विल पिक यू अप एंड दे विल जस्ट से हैप्पी दिवाली। तो सुन तो लीजिए आवाज की, उस कॉन्टैक्ट की आवाज कैसी है, और अगर थोड़ा सा समय है तो जान तो लीजिए कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है।
So I connected to a few contacts and I am so happy कि मुझे लग रहा है कि हाँ मैं थोड़ा सा और जानती हूँ उनके बारे में. तो बहुत मैकेनिकल और मोनोटोनस और सेल्फ सेंट्रिक लाइफ हो गई है. थोड़ा सा अपने से निकल के अगर हम बाहर जाएंगे, जुड़ेंगे लोगों से, तो त्योहारों से अच्छा मौका नहीं होता है. कोई कैसा भी हो, उसके साथ हमारा कैसा भी रिश्ता हो, कैसी भी वेवलेंथ हो, बट त्योहार एक मौका देते हैं कि आप कनेक्ट कर लीजिए किसी के भी साथ. सो तो ये एक दूसरा थॉट था कि कॉल कीजिए लोगों को, बातें कीजिए लोगों के साथ. टेक्नोलॉजी आपकी मदद करती है टू मेक योर लाइफ इजियर, बट इट शुड नॉट डिस्टेंस यू फ्रॉम पीपल. मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी ने ना लोगों को लोगों से बहुत दूर कर दिया है. तो वो लेट टेक्नोलॉजी नॉट overpower us, let technology not take over what is essentially ours. That connect is ours, that connect with that human connect ना, उसका replacement हो ही नहीं सकता. तो वो कनेक्ट फिर से एस्टैब्लिश करेंगे ये दिवाली. दैट इज व्हाट माय विश इज, दैट इज व्हाट आई वांट टू शेयर. तो खूब सारी दिवाली मनाइए. ऐसा होता है ना, सब दे दीजिए उसको अपना, और फिर देखिए वो किस तरह से आता है. वो बहुत तरह से रूप में आता है. मेरे लिए तो उसी तरह से आया जब मेरे बच्चों ने बोला कि दिवाली इज सो स्पेशल फॉर अस, और मुझे लगा कि हाँ, इट केम बैक टू मी एंड आई थिंक दिस इज द लीस्ट दैट वी ओ टू आवर चिल्ड्रन. खाली पढ़ा देना, खाली दे देना सब कुछ नहीं. ये जो यादें होती है ना, ये सबसे बड़ी चीज होती है. ये जो जो वो और हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो दे अपने बच्चों को. सो विद दीज टू थॉट्स आई थिंक मेरी तरफ से इतना ही इस दिवाली. एंड आई एम श्योर दैट you all will have a great, happy, prosperous, delightful, excited, enthusiastic Diwali. ऐसी होनी चाहिए. Safe Diwali is not a word, okay? One more thing, please. Diwali has always been safe. Don't use the word safe at all, okay? त्योहार, सेफ्टी का त्योहारों से कोई मतलब नहीं है, खुशी से मतलब है. तो have a happy, prosperous Diwali. Yes. Thank you so much. Thank you so much for sharing, Ashna. That was so wonderful. And this last point which you shared was so important कि कैसे हमारे अंदर क्या बात बिठा दी जाती है, हमें समझता नहीं. तो हम अभी लिखते हैं हैव अ सेफ दिवाली. तो इसका मतलब क्या है? हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अनसेफ है, कहीं ना कहीं इसमें नुकसान हो सकता है, कहीं ना कहीं इसमें कुछ हमारा कहीं कोई फिजिकल हार्म हो सकता है. अरे ये कब से हुआ कि कब से हैप्पी दिवाली बिकेम अ सेफ दिवाली? तो इतने नैरेटिव्स बिल्ड हो रहे हैं कि आप समझ नहीं पाओगे कैसे सटली, प्यार मोहब्बत से, फिल्मों के द्वारा, इसके द्वारा, उसके द्वारा हमारे मन में क्या क्या चीज बिठाई गई है और हम उस पर जीना चालू कर दिया है. तो दिवाली, दीपावली, ऑल द फेस्टिवल्स हैव बीन सेफ. कहां पर दुर्घटनाएं नहीं होती हैं? सब जगह होती हैं, राइट? एंड बट फेस्टिवल्स में सेफ का क्यों बोलना है? सो दिस मीन्स वी आर क्रिएटिंग अ नैरेटिव दैट दीस फेस्टिवल्स हैव बीन अनसेफ. बट मुझे लगता है कि हम ये फेस्टिवल्स को हम अच्छे मन बनाएंगे. जैसे मैंने कहा कि खुशी के मौके होते हैं और खुशी वेट करती है, खुशी रुकी है, खुशी हमारे आंगन में, हमारे दरवाजे के बाहर वेट कर रही है कि हम कुछ करें तो वो हमारे घर में कदम रखे. और जिस घर में खुशी ने कदम रखा, फिर उस घर में तो दीपावली सालों साल रहती है. फिर उसमें कोई दीपावली का वेट नहीं करना पड़ता. एंड लाइक मानसी सेड दैट उसको बोझ मत समझिए, कोई त्योहार को बोझ ना समझिए कि आपको एक्स्ट्रा काम तो है, काम तो करना ही पड़ेगा, बट इट्स नेवर अ बर्डन ऑन अस. सो with these simple and lovely, beautiful thoughts, I feel we all will celebrate Deepawali and all the festivals with absolute involvement. And au revoir, so many lovely thoughts which have come in. Love you all for your expression of love, all of you. And when you, like she said, that the best thing we can leave for our children is not the money, not the property, not the shares and whatever it is. The best thing we can leave for our children is the culture which we leave in our children. तो बच्चों के अंदर हम क्या छोड़ के जा रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं बाहर. So what we leave inside them is much more important for than what we leave for them. So I think festivals is one great way by which we can leave a very beautiful culture in our children. So आज मिलिए, लोगों से मिलिए आज कल परसों, और आपको घूमने जाना है वो आप 24 तारीख के बाद जाएंगे, भाई दूज के बाद जाएंगे, लेकिन उससे पहले कहीं निकलने का आप सोचो मत.
घर में रहो, लोगों को घर में बुलाओ और जबरदस्ती बुलाओ लोगों को घर में, मालूम पड़ेगा ना औकात क्या है, घर में कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड घर में जब बुलाओगे तो फिर खाने बनाओगे, खाने अपने हाथ से बनाओ, कितना भी केटरिंग कर लो, बाहर से बुला लो, लेकिन एक आध डिश तो खुद बनानी चाहिए, एक आध समथिंग व्हिच यू शुड मेक ऑन योर ओन, तभी तो त्योहार का मजा है। पसीने बहने चाहिए, मेहनत होनी चाहिए और मस्ती होनी चाहिए, म्यूजिक होना चाहिए, हंगामा होना चाहिए, डांस होना चाहिए। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट फेस्टिवल्स आर। सो हमारी विश एंड ये एक prayer from our side that you all will celebrate all the festivals and especially the Deepawali coming up in the best possible way, and you will bring in happiness like never before. So love you all, and चलिए त्योहार मनाते हैं। धनतेरस है आज, आज धन की वर्षा हो आप सब पे। एंड अरे बहुत सारे लोगों ने बहुत लिखा, I have missed out. Let me read a few what you have written. I think we should make small snippets of what's please do spread all the snippets which you can. YouTube में रहेगा, वहां से निकालो and you spread it out, right? आज कुछ लोगों को ऐसा हंगामा भी हो सकता है, I don't know, but I have just shared my thought. See, secularism is not about not speaking about who you are, right? Secularism is all about you holding what you are, but you not putting down something else. हम किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अपने बारे में हम बोलना छोड़ देंगे, ये थोड़ा ना सेक्युलरिज्म है। And if we will not talk about our culture, our festivals in India, then फिर कहाँ बात करेंगे? कौन सा देश हमारा है? ये तो देश हमारा है, अगर इसमें नहीं बात करेंगे फिर कहाँ करेंगे? इसमें नहीं बनाएंगे फिर कहाँ मनाएंगे? Right? So we have no plan B, we have no other country to go to, we have only this place to live in and die here. So we will hold on to our festivals here and we will celebrate our festivals here. So God bless you all and wish you all one more time a very very happy Deepawali. दीपावली की राम राम सबको, अच्छे से मनाइए, खुशियों से घर को लाद दीजिए, and we'll see you next HM with another beautiful lovely subject. हाँ, अभी तुम लोग ये सब डिमांड, मैम should also speak every HM, मैं काफी नहीं हूँ क्या? उनको भी काम पे लगा दो। चलो, thank you so much, love you all for appreciating her presence today. मेरी दीवार मिल खुशियों तो आपके प्रेजेंस से, अरे वाह वाह, खुश कर दिया मानसी। लव यू ऑल, दैट इज।